Hello friends, I hope your preparation is going well. आज का ये जो वीडियो है, it's going to be a very important video for someone who's preparing for the prelims 2022 and someone who's preparing for the exam as a whole. 50 दिन रह गए हैं prelims के लिए and इस time पे there are certain mistakes that people commit which ends up deciding if their name is coming in the list or not. मैंने जितनी भी बातें की हैं टॉपर से, जितनी भी बातें की हैं मेरे अपने स्टूडेंट से, मैंने देखा है कि दे हैव एंडेड अप कमिटिंग दिस मिस्टेक एट सम पॉइंट विच हैज़ कॉस्टेड देम टाइम. So today we're going to talk about this and let me preface this by saying कि ये motivation video नहीं है. This is not here to motivate you. This is just to point out these 10 big mistakes so that you don't commit them. Okay? So let's jump right into our class. Now, the first biggest mistake that someone commits when they're preparing for this examination is them thinking that उनका जो motivation है ना वो missing है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब तुम इस स्टेज पे आ गए हो where you've studied the whole year. You studied and imagine someone who's giving this examination for their second, third or fourth attempt. You have been studying the same books again and again. You've been doing the same thing again and again. तो इस स्टेज में आके ना there's this part in you which tells you that यार मेरे से नहीं हो पाएगा शायद, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही बुक दोबारा खोल के पढ़ने के लिए. यू डोंट नीड मोटिवेशन यार, यू डोंट नीड दिस मोटिवेशन. यू नो अब अभी क्या होगा ना, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर मूवीज, यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम टॉपर टॉक्स, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम कोट्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट यू नीड टू डू इज राइट नाउ टेक अ पीस ऑफ पेपर and in that write down every single reason why you started this examination preparation. ये हमने स्टार्ट ही क्यों किया था? कुछ तो चाहिए था ना अंदर से. You needed something, you wanted to do something, and this might be something that developed during your preparation. अपने reasons खुद लिखो पेपर पे, खुद लिखो, you put them down and then you read them and this is it. ये है हमारा reason. This is the reason why we're preparing for it. We don't need any external motivation. We don't need to depend on an external motivation to do this. 50 दिन रह गए and in these 50 days you're going to do this examination because of exactly why you started this, not for some external reasons. Okay, so that's the first mistake that people commit. The second mistake that people commit when they're preparing for something like this is that they think कि अब जो हमारा एग्जामिनेशन, अब जो 50 दिन बचे हैं ना, इन 50 दिनों में ना हम कंपाइलेशन कर लेंगे. अब कंपाइलेशन का मतलब क्या है? तुम्हारे अभी अभी अगर तुम मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में you have बतेर compilations. You know which compilation I'm talking about. You also know all the knockoffs of these compilations. And it's not just the market. Even if you go and look for compilations online, there are thousands of compilations that are coming every day, especially near the prelims. And इस टाइम पे क्या हो जाता है ना, you'll start overloading your mind because every single time you see a compilation, you'll be like, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने. I didn't think about rights issues. I did not think about government schemes. I did not think about the number of names of waterways. But this is, again, you're taking your preparation, you're completely obliterating it. हम ना ये जो इतने दिनों से पढ़ते हुए आए हैं, we are literally keeping all this aside and we are only focusing on the things that we have not covered. You're not supposed to do compilations 50 days before the examination. हाँ, if you've studied current affairs, you've studied newspapers, you've made notes through them which are your own notes, go ahead, do them. That's exactly what you need to do. इसी का तो रिविजन करना है हमको. This is where we're gonna start building our cues. This is where we're gonna start building our fundamentals. I've studied, I've made notes, I've done it. अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, अगर तुमने न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए हैं, इस टाइम पे the only thing that I could suggest is you pick up one compilation. Okay, one compilation of only core things. Just because UPSC asked you in 2021 that there are 3 questions on sports doesn't mean now you pick up a section on sports and you start reading the whole thing. That's not going to help you. What you need to do is stick to your basics. Compilations भतेर नहीं देखनी है. Compilation तभी उठाना है अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो भी सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट्स के लिए. Core subjects, polity, economics, क्या हुआ है, नहीं हुआ है. And trust me, if you've read the newspaper, you know these things already. Prelims is not only just checking your depth, they are also checking your extent. और ये extent तुमने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 सालों में build किया है already. So you don't need to go for these compilations. You don't need to go for these compilations. Take it from me. Take it from all the toppers that have qualified this exam. Right? The third mistake, which is a very important mistake that people will start making during this time, is
उनका जो लर्निंग स्टाइल होगा ना, दैट लर्निंग स्टाइल विल स्लोली डेवलप फ्रॉम अ एक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग टू अ पैसिव स्टाइल ऑफ लर्निंग. अब पैसिव स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या होता है? हमने वीडियो खोली, हमने देखा अरे एंशियंट तो मैंने कवर नहीं किया है. सो एंशियंट इंडिया में देयर इज अ 2 hour मैराथन वीडियो, देयर इज अ 4 hour मिडीवल का मैराथन वीडियो. हम ये देख लेंगे, हम बैठेंगे आराम से, एंड देन वील स्टार्ट वॉचिंग अ 4 hour वीडियो while eating, while doing anything, telling ourselves कि हम तो पढ़ रहे हैं अभी. We are reading. I'll watch a 30-hour marathon video on polity. I'll watch, I think I'll just go ahead and watch all the Hindu editorial videos that have been posted. क्योंकि 30 minutes की वीडियो होती है, अगर मैं अभी बैठ के देखूंगा तो शायद मैं 6 महीने कवर कर लूंगा. यार इस passive learning से, where you're not even involved with the learning, only thing that you're doing is watching and listening, you're not going to recall it. इससे क्या होगा? When a question even remotely close to this comes in the examination, you'll get confused immediately because UPSC तुमको direct options तो उठा के नहीं देने वाला. They want you to think, they want you to recall what you've read about that conversation, read about that topic, read about that news. So ये जो passive learning वाला time आ जाता है ना इस time पे, कि मैं अब ना जो भी छूट गया उनके videos देख लूंगा. That's not going to help you. वो नहीं याद रहेगा. You have to do active learning. Active learning क्या होता है? You read everything, the same book that you've read before. You read the same book. You strengthen the connections, the memory connections that you've made inside you. You strengthen them, and then you write them. You write the things that you've written. You analyze them. You make it an active part of your learning. मैं कर रहा हूँ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे notes पढ़ रहा हूँ, मैं underline कर रहा हूँ. I'm getting involved with it actively. And there is one way where you can transform these passive learning into active learning. If you, let's say, watching a video and you're making notes. But ये अभी का time तो नहीं है ना. You have 50 days to go. You can't do a passive learning. इसमें सिर्फ 4 घंटे waste होंगे. काम नहीं होगा कुछ. Because ये तुमको prelims में नहीं help देगा. And ये चीज़ बताते नहीं है लोग. People won't tell you that something like this will end up wasting your own time. Now the fourth point, which again is a very important point for someone who's giving the examination right now, is that हम सोचते हैं ना कि ये जो हमारा जो 50 दिन बचे हैं, इस 50 दिन में यार हमने तो टॉपिक ही कवर नहीं किया, हमने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, हमने बजट नहीं पढ़ा, हमने कोई और टॉपिक छोड़ दिया. तो अभी पहले ना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं. पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी जो क्लास 11th 10th की छोड़ दिए वो देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं. रिविजन कब करोगे? When are you going to revise? When are you going to think about all the things that you've read? When are you going to make your memory so strong that अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है मैं चुटकी बजा के दे दूंगा आंसर? When will you do that? This is the time to do that. You have 50 days remaining. You should be at least be in a position where you can do one full revision of all the core subjects you've read, all the notes that you've made. हमको नहीं करना है कि आज हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कल रिविजन करेंगे, बिकॉज वो कल तो आने नहीं वाला, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कभी होने नहीं वाला. दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू थिंक दैट यू गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस एंड देन उसके बाद रिविजन करेंगे. ये नहीं करना है अभी. What you're going to do is you're going to revise right now. Now the fifth big mistake that people commit during this examination, especially this close to the examination, is that they start thinking about the probability that is involved. हम सोचने लगते हैं भाई there are about 12 to 18 lakh people filling the form. There are about 6 lakh people sitting for the examination. Examination होते होते सिर्फ 780 बच्चों का सिलेक्शन होगा. मैं तो इस कोटा का हूँ, मैं तो उस कोटा का हूँ, मेरा शायद सिलेक्शन होगा नहीं. And I don't think I'll be able to do this. Like 50 days before the examination, you're doubting yourself and you're talking about the probability. इसी के बारे में we end up talking to some senior aspirants. We'll end up talking to some teachers. जैसे you'll talk about how you feel like you're not ready for the exam right now. What you forget is ये जो probability का game है ना, वो तुम्हारा और बाकी लोगों के साथ नहीं है. The only thing that you're competing with is a cutoff line. अगर तुम्हारे यूपीएससी का कट ऑफ 100 मार्क्स का है एंड अगर तुम्हारे 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, देयर इज नो वन हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन. योर ओनली कॉम्पिटिशन हियर इज दिस कट ऑफ लाइन. एक सीट चाहिए तुमको 780 सीट्स तो नहीं चाहिए. You have a cutoff in your prelims, you have a cutoff in your mains, and then when the final list comes in, it also comes basis on a cutoff. The only competition you have is the cutoff line. That's the only thing you look at. और किसी चीज को नहीं देखना है मैं probability में
किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, जब तक तुम उस कट ऑफ के ऊपर हो नथिंग मैटर्स. आज the person who's scoring 150 in prelims has the same probability of qualifying in mains examination as a person who's clearing the cutoff by half a mark. That is the beauty of this examination. हमको नहीं पढ़ना इस probability के गेम के अंदर कि मुझे नहीं पता यार इतने कम सीट्स हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे लगता है मेरा नहीं हो पाएगा. ठीक है, दिस इज नॉट द मिस्टेक दैट वी गोना टॉक अबाउट, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी गोना ड्वेंडल ऑन, especially 50 days before the examination. Now, the problem number 6 that people face during this time is something that I call the mock test curse. ये जो mock test curse होता है ना, ये 3 टाइप का mock test curse होता है. जो सबसे पहला mock test curse होता है वो है जब तुम अपने आप से ना you cheat with your own self. What does that mean? I've spoken to students and this is not just students. I've seen this in people who've qualified the exam that they've done this. हमने mock test दिया and अब mock test के अंदर ही पीछे answers होते हैं या कहीं ना कहीं answers होते हैं, या तो तुम्हारे पास you have your phone, you can just Google them. While giving the exam mock test, I'm reading a question and I know शायद मुझे इसका आंसर पता है but मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ, तो मैंने जल्दी से पलट के आंसर देख लिया और फिर वो मैंने बबल कर दिया, या फिर मैंने जल्दी से गूगल कर जस्ट चेक कर लिया कि मेरा आंसर सही था कि नहीं, एंड फिर मैंने उसको बबल कर दिया, एंड ऐसे करते करते मैंने पूरा मॉक टेस्ट दे दिया. मैंने मॉक टेस्ट चेक किया, आई हैड गुड मार्क्स इन माय मॉक टेस्ट, आई एम हैप्पी. बट आर यू एक्चुअली हैप्पी? ये तुमने थोड़ा बहुत देख दाख के तुमने आंसर करके यू गॉट 120 इन योर मॉक टेस्ट एंड यू टेलिंग योरसेल्फ दैट द प्रिपरेशन इज गुड, बट तुमको अंदर से भी पता है तुमने चीट किया है, तो उससे खुशी तो मिलेगी नहीं. उससे एक एक्सटर्नल खुशी जरूर मिल जाएगी एंड दिखाने के लिए खुशी मिल जाएगी टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर फैमिली दैट नहीं मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं मेरे. एंड दिस इज व्हाट गोज ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट कर्स, व्हिच इज तुम अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से चीटिंग करते हो ये बोल के नहीं मेरे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरे तो 120 के ऊपर आ रहे हैं, मेरे तो 110 के ऊपर आ रहे हैं. व्हेन यू योरसेल्फ आर लुकिंग एट द आंसर, चूजिंग द आंसर, थोड़ा बहुत देख लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, अरे वो वीडियो याद आएगी जहाँ पे मैंने देखा था, मैं बस एक बार चला के देख लेता हूँ, ओह सी आई रिमेंबर्ड इट. फायदा क्या है? यू गो टू योर फ्रेंड्स, यू टेल देम यू गेटिंग 120 इन योर मॉक टेस्ट, लेटर ऑन यू गिव द प्रीलिम्स, यू डोंट क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड देन यू होल्ड योर हेड एंड बी लाइक अरे मेरे मॉक टेस्ट में तो बड़े अच्छे नंबर आ रहे थे, मेरे इसमें नहीं आ रहे, इसमें क्यों नहीं आ रहे पता नहीं. यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यूपीएससी इज डूइंग दिस इज अनफेयर फ्रॉम यूपीएससी's पार्ट, एंड दिस इज वेयर द थर्ड पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट कर्स कम्स इन. यूपीएससी से चीटिंग करने बैठते हैं लोग. एंड व्हाट आई मीन बाय यूपीएससी से चीटिंग हियर इज द फैक्ट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखने हैं. वी समहाउ आई हैव सीन सो मेनी पीपल, endless number of people who would rather give a mock test than actually look at a UPSC previous year question paper. And that is very foolish. Here you have a document that tells you the whole past of UPSC. And I'm not asking you to analyze. UPSC को analyze करने मत जाओ भाई, because you're not going to come out as a victorious person. What you have to see is what type of questions UPSC is asking you, so that you can analyze your own preparation. You are not supposed to predict what type of questions UPSC might ask. ये probability करने की नहीं बैठनी है, हम यहाँ नहीं बैठेंगे. What we're going to do is you're going to look at previous year question papers. You're going to look at previous year question papers and try solving them and see what sort of questions can UPSC ask. ठीक है, हमको नहीं देखना कहाँ किस पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो नेक्स्ट अभी इस वाले प्रीलिम्स में फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ये नहीं करना है एनालाइज. What you have to analyze is what type of questions UPSC is asking you. What is the type of question, what is the analytical level of these questions? And the reason why this is part of the mock test curse, the खुद से cheating, friend से cheating and UPSC cheating, is because ये जो हम mock test देते हैं ना, ये हम self assurance के लिए देते हैं. ठीक है, अपनी जो पढ़ाई है उसको validate करने के लिए देते हैं. बट जहाँ actually करनी है, जो कि UPSC के previous year question papers देख के हैं, वो नहीं करते हैं. So I'm telling you, please, this is high time. You have 50 days to go. Go look into the past year question papers. See, and don't go wait. You don't have to go very far back. There are a lot of books in the market which have analyzed these things for you. कौन से section से क्या questions आ रहे हैं, year wise आ रहे हैं. 2010 से देख लो. Even if you look at it from 2017 onwards, you'll be doing yourself a great service. ये mock test छोड़ के जब तुम ये UPSC वाले questions देखोगे, you'll feel like that little portion of your
preparation being completed by doing this. Okay, so don't fall into this mock test curse where you're getting good marks for your own self and वही देख के खुश हो रहे हैं, friend को बता के खुश हो रहे हैं. नहीं करना ये. The next problem number 7, is a very important problem, especially from our digital age type of the digital age we're in, especially in the age of YouTube. तुम मुझे आज YouTube पे देख रहे हो, right? But this YouTube, let me tell you, has its own skewed side. And the skewed side of YouTube is, here are the videos of all the people who've qualified, all the people who've topped, all the strategies that they have. And then there are no videos at all of all the people who are still in this race, who are still going for, going towards qualifying the examination. हर साल 700 से ऊपर बच्चे are qualifying. There are about 200, 300 videos coming of these toppers talking about their own strategies, and compound this every year. So in the last 5 years, you'll have 1,000 different strategies. 1,000 different strategies telling you how to get successful in this examination. And in these 1,000 different strategies, how will you make your own strategy? तुमको शायद उसकी वो वाली strategy पसंद आ रही है, किसी की कोई दूसरी वाली strategy पसंद आ रही है. But where are you in this? The problem with the skewed side of YouTube is it only paints you this rosy picture कि हाँ हमने ये compilation कर लिया तो हमारा हो गया, हमने वो book पढ़ ली तो हमारा हो गया. Ask the people who are still in this race, who have followed those same things and made those mistakes, who have followed all those sources and yet not qualified. So in these 50 days, please don't go to the skewed side of YouTube where you'll be like, इन 50 दिनों में ये कर लो, इन 50 दिनों में वो कर लो, ये वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, वो टॉपिक्स आ जाएंगे. ये नहीं करना है. कल जब तुम सक्सेसफुल होगे ना, तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी विल बिकम अ सक्सेस स्ट्रैटेजी दैट समवन एल्स विल ट्राई टू टेक, समवन एल्स विल ट्राई टू emulate. You don't have the same background as the person who succeeded. You don't have the same background as whatever the studies they've done, and that's why the same strategy might not apply to you. So please don't give in to the skewed side of YouTube. हम ये इनकी सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुन के यूट्यूब के हिसाब से नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रिपरेशन, यू हैव टू वैलिडेट योर ओन प्रिपरेशन. अपने प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखो भाई, इट विल हैपन. The next problem, the next big problem number 8 when it comes to the preparation is, especially during this time, 50 दिन पहले ना वो अंदर से फीलिंग आने लगती है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे. ये वाले अटेम्प्ट में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. मेरा ना ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ, आई डोंट थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ, मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, मेरे से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट. व्हाई? यू थिंक द नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बिकम अ लॉट ईजियर? You think by the next attempt you'll finish all the syllabus that you have to? Or do you think you will feel completely confident कि next attempt में clear हो ही जाएगा? This is that fight or flight वाला mentality. You have a big hurdle, big danger sign तुम्हारे सामने कि 50 दिन में prelims आ रहे हैं. उस 50 दिन की वो जो anxiety है ना, वो anxiety तुमको बोल रही है भाई ये नहीं देंगे हम, ये एग्जाम नहीं देंगे. This is our primitive brain talking. This is our survival brain talking. Right? Our brain is telling us this is a very dangerous situation. I would rather escape this situation. I would fly away from this situation than give this examination head on. नहीं करना ये. You have prepared. You have read everything about this examination. वो first attempt वाले tag के लिए ना मत भागो. At the end of the day, once you clear this examination, no one's going to ask you कितने attempt में हुआ. No one is going to ask you कब दिया, कब नहीं दिया, कौन सा serious attempt था. No one is going to ask you this. You have studied, give this exam, give this attempt right now. 50 दिन में you're going to make this preparation your best preparation possible. So take this away, take this thought away from your head कि हम ये attempt नहीं देंगे. ये mistake नहीं करनी है, क्योंकि इस mistake में क्या होता है ना, आराम से 1-2 हफ्ता इसी में चला जाएगा, यही सोचने में, यही डिसाइड करने में कि ये attempt देंगे नहीं. And let me tell you what happens, people who actually decide कि हम ये attempt नहीं देंगे, पढ़ना ही बंद हो जाता है. अपने आप को रीजनिंग दे देते हैं कि ब्रेक चाहिए लंबा, और अगले 3 से 6 महीने तक ना वो सीरियसनेस आएगी नहीं जिस सीरियसनेस के हिसाब से अभी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो. यू वोंट गेट इट. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस अटेम्प्ट. वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस अटेम्प्ट. गोइंग टू योर प्रॉब्लम नंबर 9, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एंड दिस इज समथिंग पीपल फेस व्हेन दे ट्राई टू मेक शेड्यूल्स, व्हेन दे ट्राई टू हैव a strategy made for the next 50 days. मंडे करेंगे, मंडे आएगा, मंडे बेस्ड मेंटालिटी चलाएंगे, मंडे के हिसाब से अपना लाइफ करेंगे.
अरे वो मॉक टेस्ट देना है, मंडे देंगे. अगर हमको रिवीजन स्टार्ट करना है, मंडे से स्टार्ट करेंगे. अगर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, मंडे से स्टार्ट करेंगे. क्यों? वाई? द डेज आर नॉट स्टॉपिंग फॉर यू. दी यूपीएससी ने तो मंडे नहीं रखा तुम्हारे लिए एग्जाम. यूपीएससी ने मुहूर्त भी नहीं निकाला. फिर ये मंडे का मुहूर्त क्यों निकालना है? Why do you even have to think about this? If you have to start something, start it now. You want to make a strategy? Make the strategy now, start it tomorrow. You don't need that Monday वाला leeway. Monday हफ्ते में एक ही बार आता है. और वो जो Monday skip हो जाता है ना, especially for people who depend on the Monday, फिर वो अगले Monday के लिए रह जाता है. And I don't have to tell you about this because this is something that you've done irrespective of studying. You can start waking up early on a Monday. You can start going to a gym on a Monday. Everything ends up becoming a Monday. Monday वाला person मत बनो. Become the person who does the work right now. Become the person who's doing it right now, who values these 50 days, which is going for your prelims. And someone who's going to give the prelims later on, value this. Don't be stuck up on a Monday. Any day is good as any. ठीक है? कोई भी दिन चलेगा. Start आज करना है. Start आज ही करना है. And now I'm going to talk about the last mistake. And ये mistake is a mistake that is perpetually there throughout the preparation. ये mistake जो हम करते हैं ना, ये सोते जागते उठते ये चलता रहता है दिमाग में. And what is it? Future वाली टेंशन. हमको ना फ्यूचर में क्या होगा ना, हमारा इस चीज़ का टेंशन है. अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो स्कूल वाले दोस्त ये बोलेंगे, उनको पता है मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, चौथा अटैम्प्ट है. मम्मी पापा ये बोलेंगे, टीचर्स कुछ और बोलेंगे, और कोई कुछ और बोलेगा. तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ज्वाइन करूँगा? मैं इंटरव्यू कहाँ करूँगा? अरे मेरे को मेरा कैडर मिलेगा कि नहीं? मुझे मेरी पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं? मुझे मेरा सर्विस मिलेगा कि नहीं? इस टाइम पे ये थॉट्स आने लगते हैं. एंड ये थॉट्स इस टाइम पे एम्पलीफाई ज़्यादा हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है अंदर. You're very stressed, you're very anxious. So right now you start feeling like every single problem that might happen in the future, you have to make the solution of it right now. मतलब हम इतने महारथी बन गए हैं कि एग्जाम छोड़ दिया हमने, and we're thinking about all the future problems we'll face. I've seen people during this time talk about कि sir, if I reach a position tomorrow, if a politician pressures me, what do I do? Is this the time for questions like these? I'm appalled, I'm shocked when something like this happens, especially this close to the prelims. And ये आएंगी, ये thoughts आएंगी. अभी रात को जब तुम पढ़ के सोने जाओगे ना, जब बेड पे लेटोगे, ऐसी thoughts आएंगी. इन thoughts को काउंटर करना है. फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा. मुझे पता है why I'm doing this. Remember the first point में हमने motivation वाली बात करी थी, where you've written down every single reason why you're giving this examination. Look at those points. That is your tension right now. Those are the tensions that you started with. वहीं रहना है, उसी को अचीव करना है, वहीं से आगे बढ़ना है. फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा. फ्यूचर में जो भी होगा that is not in your hands. So we'll see, we'll watch. वो अपनी जगह. You're going to prepare now. You're going to do this examination now. Right? So what do we do now? In the next 50 days, you're going to revise. वो जो अपना फाउंडेशन जो क्रिएट किया है, इट डजंट मैटर सब कुछ कवर किया है नहीं किया है. अगर तुमने हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, एंड एंशिएंट मेडिवल छोड़ दिया है अभी के लिए क्योंकि वीडियो देख के कर लेंगे, उसको साइड में रखो और मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसा बनाओ कि कल मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 5 भी क्वेश्चन आते हैं ना, यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू कैन आंसर ऑल दोज 5 क्वेश्चंस. यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू बिल्ड दैट बेस. एंड हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन लुक एट. Certain things that will help you, like looking at the map, looking at the atlas, looking at the position of different rivers and things. These are important because this will also help you contextualize your own performance, contextualize your own reading. अगर मैंने geography पढ़ी है, so it's important for me to know where the river systems are. It's important for me to know which state capital lies where. And this is again part of active learning. ये वीडियो देख के नहीं सीखना है. मुझे मैप खोलना है मेरे सामने, मुझे खुद मार्क करना है, खुद देखना है. So this is what we're going to do now. We're going to make this preparation right now, leading up to the prelims, be it in the next 50 days, be it the next year. Active learning करनी है, ठीक है? We have to actively do it. Motivation अपने अंदर रखना है, बाहर से नहीं सीख करना है ये motivation. Syllabus नहीं, revision करना है अभी.
Revision is it's literally the backbone of your whole preparation. There's no point of you learning everything if you can't recall in the examination. Okay? So I want you to be in a position where this is it. This is the attempt that you've spoken about. This is the attempt that you're going to give. Okay? And this is the attempt that you will succeed in. Just make sure you don't make these 10 mistakes. I'll be posting another video which will be about things to do right before the examination, small things to cover, and later on I'll be making a much more holistic video about how you go about doing this preparation. So stay tuned, and I wish you all the best for this examination. भरोसा रखो अपने ऊपर, आराम से निकलेगा एग्जाम. Okay?